Sorry. लास्ट बेंच बैठ जा, लास्ट बेंच बैठ जा। तू अकेले बात नहीं कर रहे ना, आराम से बैठ। विष्णु लिसन तो फर्स्ट रूम, दिस फर्स्ट रूम, फर्स्ट रूम क्या होता है? आपका लाभ मिलाप बातें करना सब हो गया होगा तो अपन बैठ, जो और कुछ बातें करना है नहीं ना, क्या कंप्लीट कर रहे थे? स्टार्ट कर दिया। लेक्चर हो गए। सर आरबीसी खत्म Okay. Are you able to see the share screen option online, children? Yes, sir. The price comes we just go to the slideshow to revise the part. Circulatory system, kiya tha, excretory products and hormones to be distributed part, fluids in our body, blood, tissue fluid, lymph. Okay, diagrammatic representation of blood, lymph. ये अभी पढ़ना भी नहीं है, that is the last part of the chapter, lymphatic, तो वहाँ पे वो cover हो जाएगा. Then circulatory system of two types, open and closed. When the circulating fluid flows in the closed pipes, we say it as closed system. If it is flowing in the open body spaces, we say it as open systems. इसका example insects and human beings. ये पे human comes in a both category. When I say closed, blood circulatory system. When I say open, lymphatic system. Non-circulating fluid, synovial fluid, vitreous humor. Properties of blood: it is never stationary. Color of the blood is red in color. Why it is red in color? We already discussed about it. The volume of the blood is 5 to 6 liters. To be very precise, 5.4 liters. Taste of the blood is obviously it is slightly salty because of the presence of bicarbonates or ions, etc. The pH of the blood is 7.3 to 7.45. Okay. Again, मैंने कहा था कि अगर medical book में जाओगे तो 6.7 मिलेगा. It is slightly acidic and not another basic part. पर book mention तो अपन book के हिसाब से जाएंगे 7.3 to 7.45. Then functions of blood. The major function is to transport. So transportation में transport of digested food, transportation of oxygen. Then oxygen में it combines with oxygen to form oxyhemoglobin, combines with carbon dioxide to form aminohemoglobin and carbon monoxide के साथ carboxyhemoglobin. Okay, transport of excretory material, distribution of hormones, distribution of heat. It regulates the body heat. The 9 standard skin chapter: vasoconstriction, vasodilation. Then next function is protection by blood, clot formation, phagocytosis, engulfing bacteria by WBC.
Phagocytosis is nothing but another term for engulfing bacteria by WBCs, production of antitoxins and antibodies. Composition of blood. If I take a blood in a test tube and just leave it apart, you'll find the blood is separated into two components. One is the liquid component and one is the cellular component. The liquid component known as plasma. The cellular component is known as the WBCs, platelet and RBCs, what to say as erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. The plasma is further made up of 90 to 90% is water. Majority of the part is protein, inorganic salts and trace amounts of other substances like carbohydrates, fats, hormones, vitamins, respiratory gases and many other things. ये सब traces में होते हैं. Then, so in the protein, if you say it is albumin, which is the osmotic balance or what we say as viscosity of the blood. Fibrinogen clotting करने के लिए immunoglobulins, immunity that is produces antibodies. Immunoglobulins से ही बनता है आपका antibodies. Then inorganic salt जो लिखा है इसमें sodium chloride and sodium bicarbonate. At any given point इसको balance रखना important ही है. Because anything increase in this part will straight away increase your blood volume or decrease your blood volume. दोनों condition में ऊपर chances जाने के ज्यादा हो जाएंगे. Okay, so आपने देखा होगा अगर घर पे कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको सबसे पहला सॉल्ट इंटेक कम करने बोला है. Salt is not allowed to be given to these patients. उनका सॉल्ट अगर नॉर्मली अपन आधा चम्मच डाल रहे हैं तो उनके इसमें ना या एकदम जस्ट स्प्रिंकल. ओके, पर जिनको हार्ट का इश्यू होता है उनका और एक इश्यू आता है. जैसे डायबिटीज जिनको होता है उनको देखा होगा शुगर क्रेविंग्स होती है. वो जिनको ना खाना है वही खाएंगे. वैसा ही है अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है यू विल फाइंड क्या आप रेगुलर सॉल्ट से ज्यादा लोगे. सो इफ यू आर नॉर्मली हैविंग हाफ स्पून, ओके, घर पे सब लोग खाना खा रहे हैं, सबको फूड अच्छा लग रहा है, टेस्ट इज गुड इनफ. पर इफ योर ग्रैंडफादर इज हैविंग अ प्रॉब्लम तो उनको लगेगा सॉल्टलेस है, कम है, तो वो और ज्यादा लेंगे. ओके, और फिर किसी ने घर पे नहीं देंगे तो फिर झगड़ा हो जाता है. Because you know that age they do not also accept things. क्या इतने आसानी सुनते भी नहीं. Then plasma minus fibrinogen. Fibrinogen is a protein present in the plasma is known as serum. ये अपन वापस पढ़ेंगे platelet part में. Then first cell erythrocyte. ये अपन ने कर दिया erythrocyte पूरा हो गया. So that's the RBC part. Micron diameter दिया होगा. It is a biconcave dish shape structure. Adult man में 5 million, women में 4.5, and infant it is 6 to 7 million per cubic meter. Okay, this is not there for you. Slide डाला हुआ है just to show you. चल जो blood count किया जाता है उसकी एक slide होती है. ये manual type में. Anything आज की डेट में आप किसी भी लैब में जाओगे there is automated machines. डाला फटाक से रिजल्ट आ जाएगा. पर when you become a technician, आप चाहे टेक्नीशियन बनो या डॉक्टर बनो या कुछ भी बोलो, आपको पहला मैनुअल सिखाना ही पड़ता है. सो मैनुअल ये रहा बिकॉज मशीन बंद पड़ सकता है. सो क्या पेशेंट को बोलोगे मशीन बंद पड़ गया दूसरे दिन आके रिपोर्ट लेके जाना? कैन यू से लाइक दिस? नो. तो देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी. प्लान बी इज दिस, जो पुराना मेथड था. इसका हीमोसाइटोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर एक स्लाइड होती है. स्लाइड को न्यूबॉर्न चेंबर का आता है. इसमें आइसेड ग्राफ की तरह ग्रिड्स होते हैं इनमें, और इनमें आपका ब्लड काउंट किया जाता है. बाहर का ग्रिड होता है वहां पे WBC काउंट किया जाता है. अंदर का ग्रिड जो होता है उसमें RBC काउंट, बिकॉज WBC का काउंट कम होता है और RBC का काउंट मिलियंस में होता है. तो इसके लिए उसका रेशियो होता है और उसके कैलकुलेशन अलग हो जाते हैं. देन काउंट सिंपल है. यहाँ पे कैसी नंबर डाले हुए हैं आप. सो इस नंबर के हिसाब से उस बॉक्स में नंबर काउंट करना है. तो आपको पहले डिसाइड करना है कि बाबा मुझे ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर और दो बीच में के बॉक्स कोई भी, वो आपने काउंट कर लिए. उसके बाद देयर इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला. उसका साइज है, देयर इज अ मैथमेटिकल ऑलरेडी फॉर्मूला. तो जो आपने काउंट किया उस फॉर्मूला में डाल दोगे तो आपको वो काउंट दे देगा. ओके, व्हिच इज अ अप्रोक्सीमेट काउंट, है ना. Anybody is not going to count 4.5 million. कोई भी काउंट नहीं कर सकता. और
उस फॉर्मूला के हिसाब से the error would be plus minus very little. The 4.5 का 5.5 million नहीं होगा. Okay, it can be 4.5 का 4.6 हो सकता है, पर 5.5 इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा. Then hemoglobin, stroma, the cytoplasmic part, उसके अंदर respiratory pigment, hemoglobin, iron part and protein part. It is the iron which combines with oxygen to give me reddish brown color. Oxidation of iron gives the blood red color. Affinity of hemoglobin, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide. Oxyhemoglobin, amino hemoglobin, carboxy hemoglobin. Which is the first choice? Oxygen. Second choice? Carboxy hemoglobin is the first choice. Then, अगर मैं हीमोग्लोबिन की एफिनिटी का चॉइस बताता हूँ, तो इट्स लाइक सिंपल है. अगर आपके सामने तंदूरी चिकन, डबल पिज्जा और घर का करेले की सब्जी रखा और नॉनवेज खाते होगे, तो फर्स्ट चॉइस इज तंदूरी, देन पिज्जा एंड देन करेले की सब्जी. एग्जैक्टली सेम थिंग. हीमोग्लोबिन के सामने 3 ऑप्शन रखे हैं, जिनमें फर्स्ट चॉइस कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड चॉइस ऑक्सीजन, एंड द लास्ट एंड द लीस्ट चॉइस carbon dioxide. I said last and the least. Okay, reason. चल पहला कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ की बॉन्डिंग ज्यादा है. So if you are subject to any polluted environment जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, your body will immediately take it. Suffocation होगा, death भी हो सकती है. So that is why carbon monoxide is a problematic area. आपके vehicles में जब fuel combustion होता है, so क्या क्रिएट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? दोनों होते हैं, पर अगर आपकी व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर्स है, सीसी करके होता है, then it will break down the carbon monoxide बनने नहीं देगा. It will help it to form carbon dioxide. तो इससे सर दोनों भी तो पॉइजनस ही है, मतलब दोनों हार्मफुल है. पर पहला हार्मफुल ये ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज़ इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है. ओके, सो फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड इज ऑक्सीजन बिकॉज़ वो चाहिए हमें. तीसरा आई सेड लीस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा क्यों? मतलब इट कैन कंबाइन, बट सो कंबाइन करता है. Why it is not combining with carbon dioxide? मतलब affinity है पर करता नहीं. It rarely combines with it. ज्यादातर रैन स्कूल में है ना बच्चे यहाँ पे. अब सोचो, रैन स्कूल का गेट देखा होगा, जो है हमारा वो फ्रंट गेट, उसके सामने एक बिल्डिंग भी शायद से. मान लो इस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, सामने बिल्डिंग है और इस साइड पे स्कूल का गेट है, एंड यू आर इन 10th स्टैंडर्ड. और हो गया, मम्मी डैडी हाथ पकड़ के क्लास में छोड़ने आते, गेट तक छोड़ने आते. अजीब लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? You coming from Kalamboli or Panvel, that can be understood. दूर से आ रहे हो, सामने रह रहे हो और मम्मी से आप पकड़ के बेटी. Okay, will you like it? Can you go on your own? हाँ या ना? Okay, 4th या 5th के बाद ही मम्मी बोलती होगी जा सामने ही है. Okay, फर्स्ट सेकंड तो समझ में आता, छोटा है तो ठीक है, पर 4th 5th के बाद तो. Okay, then carbon dioxide is easily soluble in water. कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, एरेटेड ड्रिंक्स, carbonic acid, carbonated drinks. So obviously it is easily soluble in water. What is blood made up of? 90% is water. So जो आसानी से dissolve होके निकल सकता है in the form of bicarbonates. Will it try to combine with carbon dioxide, hemoglobin? मतलब जबरदस्ती attach करना है. So when it can go on its own in the form of a dissolved form, it will rarely combine with hemoglobin. Okay, leading to poison poisoning. फिर लाइफ एंड डेथ ऑफ आर्बिसिस,
यहाँ पे एडल्ट मैन में marrow of long bones, ribs, the breastbone and ilium of hip bone. Children में all bones until the age of 5. And in the embryo stage, it is liver and spleen. Embryo में bones बने नहीं है, so obviously the liver and spleen will form the bone marrow part, मतलब the blood cells form. फिर बच्चों में सब bones यूज होते हैं, because maturation phase में requirement ज्यादा है, and bones are not so well developed. So all bones will participate in the production. But as you grow adult, after 5 years, अब धीरे धीरे requirement is satisfied. So अब सिर्फ constantly maintain रखना है, and that is why all the major long bones of your body would act as a bone marrow. Am I clear? Then average lifespan of RBC is 120 days. Old and weak RBCs are destroyed in spleen, liver and bone marrow. इनमें से सबसे ज्यादा destroy होता है spleen. That is why normally spleen is referred as the graveyard of RBCs. 120 दिन घूमने के बाद वहां पे आके destroy किए जाते हैं. Destroy मतलब they are broken down into spleen and liver. RBC में से hemoglobin अलग हो जाएगा. Hemoglobin में से iron और protein अलग हो जाएगा. Iron की हमें requirement है, तो iron would be absorbed. Globin part में से amino group अलग हो जाएगा. The other part would separate out, glucose part. Glucose will be utilized and the amine group would be converted into globin था protein. Protein में से amine group निकला, बचा जो है वो glucose का फॉर्म हो जाता है, वो बॉडी यूज कर लेगी. पर जो amine है वो क्या होगा? Good, very good. Okay, amine is first ammonia converted into urea, which occurs in the liver of your body. तो यहाँ से आपका liver से excretory product आ जाता है, that is urea, ammonia, uric acid, etc. So ये breakdown of RBC से आ रहा है. You can see over here breakdown of the liver में hepatocytes, the liver cells को hepatocytes कहा जाता है, which is broken down to iron and bilirubin. Bilirubin is the pigment produced from that proteus, and that gives bilirubin biliverdin, bile pigment content. उसमें से एक कंटेंट जाता है आपके डाइजेस्टम के पार्ट से ही आगे बढ़ता है, because bile juice है, it goes into the digestive part and it goes to give the color to your fecal matter. Okay, the so-called yellowish color part, उसका shades, okay, वो यही से आते हैं. And also one of the shade comes from इसी का एक कंटेंट और जाता है आपके excretory product to give the color to your urine also. Okay, so color यही से आता है. Next, normal adult 2 million RBCs are destroyed every second. मैंने आपको ये underline करने के लिए कहा था, fill in the blanks के लिए. 1% of total RBCs are destroyed every day. जितना destroy होता है उतना ही रिकवर होना चाहिए. So replacement अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड ग्रोथ. सो रिप्लेस होना ही चाहिए. सिर्फ डिफरेंस इतना है, एज द एज प्रोग्रेसेस रिप्लेसमेंट डिक्रीजेस. एक टाइम के बाद रिप्लेस नहीं होगा, तब तुम रिप्लेस हो जाओ. ये अपस्टेयर्स. नेक्स्ट, the mammalian RBCs do not have the 3 organelles: nucleus, mitochondria and endoplasm. To increase the surface area, to minimize the oxidation process, and to make it easily move into the narrow capillaries. Count is low by 5% during sleep, higher during physical activity. Count is high 30% when you go into higher altitudes, above 4,200, etc. Abnormal count increase हुआ तो polycythemia, decrease हुआ तो erythropenia. कोई डाउट है? Leukocytes, the next one, WBCs. यहाँ से स्टार्ट करना है. Okay, nucleus is present. RBCs are enucleated, without nucleus. WBCs are nucleated. It is the nucleus which is very important in WBCs because further division is based upon the nucleus structure. Okay, उसके जो parts type है वो nucleus के structure के ऊपर ही है. Hemoglobin is not present in a WBC, so it is whitish in color.
amoeboid shape, irregular shape होता है. Squeezing of WBCs from the walls of capillary and tissues is termed as diapedesis. 99% अगर आप 10 साल के पेपर में उठाओगे बहुत बार पूछा गया है. Define diapedesis. ऊपर लिखा है देखो, पेज नंबर 96 on top, just above the diagram, 8.3 I guess ना, 8.3 है. 8.3 के ऊपर diapedesis लिखा हुआ है. चल, you had to reframe the sentence. वहां पे लिखा है यही है. Squeezing out of WBCs from the walls of the capillaries into tissues is termed as diapedesis. अब इसका क्वेश्चन जो आएगा वो नीचे दिया गया है. 8.3 का डायग्राम दिया जाएगा, हमेशा 8.3 आएगा, और ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है. आई थिंक ई स्ट्रक्चर में क्वेश्चन नंबर ये अपन डिस्कस किया था शायद से. क्या डायग्राम दिया जाएगा. डायग्राम में दे विल गिव यू व्हाट इज 1, 2 एंड 3. ओके, जैसे कि वो सेल्स के नाम दिए हुए हैं, तो वहां पे 1, 2, 3 पूछा गया है, तो कॉमन सेंस है 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 भी पूछ सकते हैं. तो उसमें अगर 3 होगा तो क्या होगा? एक होगा एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा होगा ल्यूकोसाइट्स, तीसरा होगा प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स. अगर चौथा पूछा जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा. सो 4 पार्ट वुड बी देयर. देन कम्स एस which phenomenon is explained in the given diagram. A डायग्राम में A या B वगैरह में, तो diapedesis. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द अबव टर्म. तो diapedesis को डिफाइन करना है, पर इसके अलावा they would ask ये रहा, name the cells 1, 2, 3. So what is 1? Erythrocytes. 2, leukocytes. 3, thrombocytes. Then name the identify phenomena occurring in A. Diapedesis. Explain the phenomena. Squeezing out of the WBCs from the walls of the capillaries into the tissues is known as diapedesis. Mention to structural difference between 1 and 2. Structural difference पूछा है. तो structural, enucleated, nucleated, amoeboid shape, biconcave dish shape. कि ये दो लिख सकते हो. Then name the process occurring in B and C. Phagocytosis. This is the next part to be explained over there. Okay, I said the importance of the process in the human body, application based. Okay, it has the body to kill the germs and protect us from foreign substances or germs part. Original life of WBC produced in red bone marrow, lymph nodes, liver and spleen. इन सब जगह पे ये बन रहा है. एवरेज लाइफ स्पेन कितना है? 2 weeks. हर एक का अपना अपना टाइम है अलग अलग सेल्स का, but on an average there is 2 weeks. Neutrophils live for only few hours. Fill in the blanks. Dash live for few hours. Neutrophils. Okay. Next, again fill in the blanks. 125 billion neutrophils are produced each day. It's simple है. अगर it is surviving only for few hours, 4, I think 3 to 4 hours survival rate उसका, तो उतने मर रहे हैं, उतने बनने भी चाहिए. So 125 billion neutrophils are produced every day. ये सिर्फ fill in the blanks के लिए आएंगे, किसी के लिए नहीं आएंगे. Next, count of WBCs. Count दिया हुआ है 4,000 to 8,000 per cubic millimeter of blood. Okay, then अब जहां पे count लिखा है, नीचे लिखा हुआ है 4,000 to 8,000, उसके नीचे जगह है. I want you to mention this ratio. 600:1. रेशियो लिखना है. 600 के नीचे लिखोगे RBCs, 1 के नीचे लिखोगे WBCs. So that's a normal WHO mentioned ratio of RBC is to WBC. अगर आप काउंट करोगे सिंपल है. One count is in millions, another count is in thousands.
RBC was in millions, WBC is in 1000. तो अगर उनका रेशियो निकालोगे तो कहीं ना कहीं 600 मतलब 600:1 आएगा. अब the abnormal increase and decrease of WBCs को भी word है. If it is increase, it is known as leukemia. If it is decrease, we say it as leukopenia. Now, abnormal decrease of WBCs कम होना is leukopenia. ठीक है? Abnormal increase of WBCs नहीं, टर्म का नहीं मतलब. Increase हो रहा है, क्या increase हो रहा है? What are WBCs? Soldiers of a body. बेसिक में ही बोला ना. तो मेरा सोल्जर्स बढ़ रहा है, उसमें abnormality कैसे हो? Then increase of WBCs is at the cost of RBC. Second, these WBCs are abnormal in terms of their functionality. Okay, so it's like soldiers तो बढ़े, पर वो soldiers 70-80 plus age के हैं. They are handicapped. They are all not able to catch anything. तो क्या लड़ाई करेंगे? So उस टाइप के कैटेगरी में. Leukemia is a medical term. General term, blood cancer is leukemia. Okay? अगर diagnose हुआ, chances of survival is very rare. Okay? ये घर जाना है, तो please move now. ठंडी लग रही है, ये समझ में आता है. ठंडी से बैग ऐसा रखेगा, पीछे रखेगा, कम से कम शेडी लगाने के सर को मत लगाना. पीछे कुछ इसलिए रखा हुआ है. मैंने तुझे लास्ट सेक्टर में भी वार्न किया. Okay? Do not try out my patience. तेरी हरकतें है ना, वो प्री प्राइमरी के लेवल से ही बच्चे से नीचे. Now, types of WBCs. The WBCs are broadly divided two main types: granular and non-granular. आपके टेबल में दिया हुआ है. ये टेबल में हर एक के नाम के नीचे there is a content value दिया गया है. Not required to learn. Okay? Because ये value change होते रहेगा. Then वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर. और ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पर नॉट एग्जैक्टली वैल्यू शुड बी लर्न एज सच. नाउ ग्रैनुलर में क्या है? साइटोप्लाज्म में आपको बड़े बड़े ग्रैनुल्स दिखाई देंगे एंड न्यूक्लियस इज कंस्ट्रिक्टेड लो फॉर्म में. whereas नॉन ग्रैनुलर में विदाउट ग्रैनुल्स एंड दे वुड बी योर सिंगल लार्ज न्यूक्लियस. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया इज दिस पार्ट. रीजन, अगर इंडिविजुअल डायग्राम डाला, आइडेंटिफाई द गिवन सेल, गिवन द फंक्शन, तो मार्क्स जाने के चांसेस ज्यादा. अब उसके ऊपर और एक प्रॉब्लम आता है. अगर स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा. अपना स्कूल अमीर तो है नहीं, क्या कलरफुल डायग्राम देगा, है ना? कोई भी स्कूल नहीं देगा. उसके बाद समटाइम्स हैंड ड्रॉन डायग्राम, समटाइम्स हैंड ड्रॉन डायग्राम होता है, तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है इस पार्ट में. पर अगर डायग्राम टेक्स्ट बुक से उठा है या नेट से उठा है, तो प्रॉब्लम ये आता है कि जब उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया जाता है, तो कभी कभार उसमें जैसे कि आपके सेकंड पार्ट में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, तो ब्लैक एंड व्हाइट को कन्वर्ट करोगे ना, तो उसमें में सब डॉट डॉट दिखाई देता है, ग्रैनुल्स दिखाई देते हैं आपको. तो कंफर्म होना ग्रैनुल दिख रहा है, तो ऊपर का 3 होगा. छोटा भी हो या बड़ा, अपने को ग्रैनुल दिख रहा है ना, तो वो डायग्राम की क्लियरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर हैंड ऑन होगा तो एडवांटेज भी होता है कभी कभार, बिकॉज हैंड ऑन में they will draw it simply like this. Sir, but nucleus को देखे तो पहचान. ये है the first condition which is given here. That is your neutrophils. अगर एक और ये दिखा, इसको दिखाया नहीं, मतलब प्लेन रखा,
ये बन जाएगा आपका सेकेंड वाला इओसिनोफिल्स। और ऐसा एकदम एम्ब्रियो की तरह लग रहा है, लग रहा है अंदर फिटस फिटस रख के रखी है, ओके, तो वो लगेगा तीसरा वाला, दैट इज बेसोफिल्स। अब आइडेंटिफाई वैसे ही करना हो, कोई ऑप्शन नहीं है। Okay, so we go ahead with the part. पहला वाला neutrophils. Now, why the name neutrophils, basophils, and eosinophils? When these cells were used for studying, इनको अलग-अलग dye से stain किया गया, and it was happened to found out that a neutrophil was only able to stain by a neutral dye. So neutral dye के वजह से उसको नाम दिया गया neutrophils. Nucleus with 3 to 4 lobes, 1, 2, and 3. 3 lobes है, nucleus है. Granular cytoplasm, you can see there are granules onto it, stained with a neutral dye. Function, engulf bacteria, phagocytosis. Up. Second, eosinophils. Okay, you can see prominent granules over there. Then nucleus with 2 lobes, इतना distinct नहीं है पर दिखाई दे रहा है शायद से. Last cytoplasmic granules, stained dark red with eosin. कई बुक्स में इसको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, eosinophils और acidophils because it is stained by acidic stain. Okay, engulf bacteria ये भी phagocytosis करवाता है. Secrete antitoxins, that is antibodies, and last associated with allergy. So जब भी आपको एलर्जी रिएक्शन होगा इसका वैल्यू बढ़ेगा. Third, basophils. Nucleus large, indistinctly lobe. Lobed है पर इतना क्लियर दिखाई नहीं देता. Okay, granule stained with basic dye. Example, methylene blue. Release chemical histamine for inflammation with dilate blood vessels. Please underline histamine. वहां पे लिखा हुआ है. Can be asked for the name the following, etc. Chemical released by basophils. Histamine, which is leading to the dilation of the blood vessels. Okay, normally allergic reactions या आपके मुंह में छाले वगैरह आता है तभी इफेक्ट दिखाई देता है. So then we take medicines which are antihistamines. Okay, वो एविल वगैरह खाते होगे, कभी सुना होगा नाम एविल का. It's a basically an antihistamine drug. इसके इफेक्ट को ये नलीफाई करेगा, bringing things to normal conditions. Lymphocyte, smallest of the WBCs. In a very simple language, अपन वो बोलते हैं क्या, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. आपण मध्ये बोलतो से रिकॉल हिंदी, मराठी मध्ये तर काय मूर्ति लहान कीर्तिमान, तो वैसी कैटेगरी में आता है. Then सबसे छोटा है पर इन सब का टॉप पोजीशन इज दिस. The most important WBC of your body is because it produces antibodies. Further, lymphocytes जो होते हैं, they are developing at two places. बनते bone marrow में, they will form in the bone marrow. पर बनने के बाद उनको मैच्योरेशन करना होता है. तो इनका मैच्योरेशन अलग जगह पे होता है. अगर ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं तो इनको बोलते हैं B lymphocytes. पर कुछ thymus में होते हैं, that is known as T lymphocytes, referred as B cells and T cells. HIV, human immunodeficiency virus, 9th standard में पढ़ा था, targets and destroys. T cells are the one which activates B cells to produce antibodies. तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी है. क्या can we directly activate B cells अगर T cells destroy हो चुके हैं? अगर हम ये कर पाए तो HIV का इफेक्ट कम. But that's not possible till. So without T cells, B cells will never produce antibodies. And if there is no antibody, your immunity is zero. So that is why it is more significant. Then
न्यूक्लियस लार्ज किडनी शेप के, इनमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, पहले वाले में भी कोई ग्रैन्यूल्स नहीं था. At the site of infection transform into macrophages. Then macrophages means large in size, बड़े बन जाता है, they can form NK cells, natural killer cells भी कहा जाता है इनको. So they will simply go and ingest the germ. Phagocytosis will occur by monocytes. Now all these 5 types of cells, जब आप ब्लड काउंट करने जाते हो तो एक होता है, मैं लास्ट टाइम से समथिंग नोन एज होल ब्लड काउंट. होल मतलब पूरा ब्लड का काउंट किया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का. बट दैट इज जस्ट अ पैरामीटर. Three of you take your bag, leave, and next time you are all entering with your parents in my class. Please leave. All 3 of you. You are not entering my class till your parents come and meet. Go. Sorry. तिघांना बाहेर ठेवलं ना, तिच्या आई वडिलांना बोलून आणि याच्या पुढे ना एक पण याचा आउट करायचं आणि मेसेजचा अनुभव सरांना त्या सर नॉट गोइंग टेक द नाही का आणि स्पोक फॉर एनीथिंग. You are not entering my any of the lectures. Go. Your parents meet me and Anubhav sir. I will decide whether to take you in the class or not. Out. I said out. You already wasted my 2-3 minutes. And I mean that you're not entering any of my lectures. You go and talk to your parents. Go and meet me also and Anubhav sir also. And officially we send a mail to your house also. तुमने भी ऐसी है? Just sad to see that your parents are paying lakh rupees for this purpose. You come here for study and not for doing time pass. Time pass करने आना ना तो मत आओ. 1 लाख रुपीस में 2 एसी आ जाएंगे घर पे आराम से. Once in a while I can also understand. थोड़ा बहुत मस्ती मारो तो मैं भी समझ में आता है. Okay, now then whole blood count is one parameter, but doctor will always go for the next count. इसको बोला जाता है DC, differential count, because ये सबसे important होता है आपके लिए. You can see just the imaginary part over here. Normal value दिया हुआ है in counts के. Okay, आपका जैसे DC count किया गया, जैसे मान लो अगर is having some fever, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पहला क्या बोलेगा, ब्लड टेस्ट कर. Okay, ब्लड टेस्ट किया and the moment it does a blood test and lymphocyte का normal 20% 83 है, पर इसके count में it goes to 60%. बहुत ज्यादा हो गया. So what is it showing? इसको viral infection. Okay, so there are certain slabs which are given. तो डॉक्टर को पता चलता है कि बाबा इसके वजह से ये प्रॉब्लम होगा. Okay, so he would diagnose that part initially only. That's again not a specific. जैसे कि अगर whooping cough है या mononucleosis है,
या यहाँ पे कैंसर बेसोफिल, देन ये सिर्फ एक सिम्टम, एक इनिशियल स्टेज है. अगर डॉक्टर को लग रहा है कि हाँ इसके सिम्टम तो लग रहा है कैंसर जैसे, देन ही वुड गो फॉर द हायर टेस्ट. कि ऐसा नहीं कि इसका काउंट बढ़ गया फिर इसको कैंसर हो गया, कि दैट्स जस्ट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट. के उसके बाद के अगर अलग टेस्ट करेंगे. इसलिए अगर मान लो मलेरिया मोनोसाइट काउंट बढ़ा तो दैट वुड नॉट कंफर्म कि ये मलेरिया है. सो मलेरिया के उसके लिए अगला टेस्ट करना पड़ेगा. Okay, so that is how the DC count helps to identify, and that is why doctor always rely on blood tests. Okay, then comes functions of leukocytes. Pehla function, phagocytosis. Okay, now what is phagocytosis? Engulfing of the bacteria or a foreign substance by a WBC. So you can see the bacteria has come in contact with it. It will simply taken inside by forming pseudopodia and circling it, and the germ would be taken inside and digested. Okay, that's phagocytosis. Nobody is going to ask when you ask this, explain. Diagram दिया जाएगा. What is explained in the given diagram? Name it. Phagocytosis. इसका definition नहीं पूछेंगे, कि basic general knowledge में आता है. Then functions of leukocyte. दूसरा लिखा है inflammation. ओके, अब इन्फ्लेमेशन में आपको क्या मार्क करना है? वहां पे ढूंढना. फर्स्ट लिखा है राइट हैंड साइड पे, प्लीज मार्क. कैन बी आस्क्ड एज अ व्हाट इज पस और डिफाइन पस. मस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड WBCs टुगेदर विद द टिश्यू सेल्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया. माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, inflammation is nothing but there is a redness, heat, swelling, etc. ये आपके पहले पार्ट में लिखा हुआ है. ये कोई पूछ रहा नहीं है पर बता रहा हूँ. क्या inflammation is nothing but swelling हो रहा है, redness होगा, heat create होगा, maybe sometimes you might show itching, scratch करोगे, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है. Okay, severe cases में हॉस्पिटल से pus बन रहा है. Formation of pus, good, bad. गुड ना, क्योंकि वो एक चीज बाहर निकल जाती है. समथिंग एक सब्सटेंस होता है, एक्सक्रीट्स दैट WBC. मतलब अपन वो जो क्या बोलते हैं स्किन क्लीन करते हैं वगैरह, वो डेड सेल्स को ही निकालते ना. तो अपने बॉडी में पस बनना चाहिए ताकि बाहर निकले. मतलब पस बनना अच्छी बात है. स्किन बाहर, डेड सेल बाहर निकल रहा है तो पस बनाना चाहिए. हाँ या ना? अच्छी चीज है. अच्छी चीज है. अब गट फीलिंग. ओके, और कुछ? बुरी चीज है. And primarily pus formation is a good thing. Now, why good thing? Because छोटे बच्चे को अगर पेट दर्द कर रहा है, न्यूली बॉर्न बेबी जो बात नहीं करता, पेट दर्द कर रहा है वगैरह, हाउ डज अ मदर कम टू नो? रोता है या मिल्क पिएगा नहीं या शायद लूज मोशन. दैट इटसेल्फ शोज कि मदर पर कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है. Then अगर आपके बॉडी में पस ही नहीं बना तो will your body come to know there is something wrong in your body? That's a symptom shown by our body. There is something wrong happening in your body. Okay, so pus बना है, so we can take care of it. अगर pus बना है, then obviously we take care of it. But अगर वो regularly बनते जा रहा है, continuously, then your body is not able to recover. Then it is a problem. So obviously अगर pus ज़्यादा बन रहा है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स पे डालेगा ताकि जल्दी रिकवर कर. Okay, so pus formation is composed of dead WBCs together with the tissue cells which are getting destroyed along with the bacterial cells. Okay, then next function is formation of antibodies. अब next page पे जाना. पहला ऊपर येलो बॉक्स में लिखा हुआ है एंटीबॉडीज एंड एंटी अलग है. Sure. And antibodies और एंटी टॉक्सिन्स दोनों एक ही है.
Then say, sir, नाम अलग अलग क्यों दिया? Antibodies are nothing but specialized proteins which produces antibodies against antigen. What is an antigen? Any foreign substance or anything which creates a antibody is known as antigen. Okay? अब एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं. पोलियो वायरस अपने बॉडी में गया, foreign substance. So what is the polio virus will be having? Antigens. What will my body produce? Antibodies. Okay. अब चिल्ड्रन वो पोलियो वायरस के साथ अटैच करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा. That is antigen antibody reaction. So that is very common. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है formation of antibodies. अब अगर antitoxins, what are antitoxins? Suppose there is a bacteria entering into your body. Clostridium tetani, C10. Okay, तो ये बैक्टीरिया अपने बॉडी में आने के बाद it creates a poison. Okay, harmful है obviously. किसको टारगेट करना है? पहला पॉइजन को डिस्ट्रॉय करना है और बाद में बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है. So my body, ये पॉइजन भी तो केमिकल सब्सटेंस है, आवर या फॉरेन? ये भी तो एंटीजन की तरह काम कर रहा है. So अब the antibodies will target this poison. Antibody यहाँ पे भी बन रहे हैं, अब इसको टारगेट कर रहा है poison. Is it destroying the microbe? No, they're destroying the poison. So वो poison के ऊपर वर्क कर रहा है तो उसको बोलेंगे antitoxin. 9th standard aids to health, जो चैप्टर दिल्ली 2 उसमें एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन दोनों ही था. एंड दे आर सेम. एग्जाम में भी आया था और मैं राउंड करके आया. दे आर सेम, ये लिखा भी था. एग्जांपल इज द टीटी इंजेक्शन, डिप्थेरिया इंजेक्शन, एंड द लास्ट थिंग इज एंटीविनाइन, एंटीवेनम. स्नेक बाइट में, सो स्नेक बाइट में द पॉइजन हैज टू बी नलिफाइड. वहां पे क्या यूज कर रहे हो? एंटीबॉडीज. पर वो किसके डिस्ट्रॉय कर रहा है? पॉइजन. तो आप इसको क्या बोलते हैं? एंटीवेनाइन. एंटीवेनाइन नथिंग बट एंटीटॉक्सिन. So antibodies and antitoxins are one and the same. They are specialized proteins which comes under the category of immunoglobulins. इसे अपन बोलते हैं IG. So IG is the type of antibody protein which will always help in the formation of antibodies. So any foreign substance entering into your body is antigen. Now, certain times every cell of your body has a receptor that also acts as an antigen. अपने bodies में भी antigens होते हैं. सिर्फ antibodies अपने antigen को identify करते हैं. भाई अपना है, इसको कुछ नहीं करना है. Okay, so we are not affected. पर कभी कभार एंटीबॉडीज अपना नहीं है कि गलती से उसको भी मार दिया जाए, तब अपन उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. A very simple example of it is, heard about rheumatoid arthritis? Synovial fluid कम हो जाता है. 9th standard. Bones gets friction. धीरे धीरे टूटेंगे, क्रैक्स होंगे. चल, that is normal. ये होता ही है, बुढ़ापे में तो कॉमन है आर्थराइटिस. पर अगर मान लो, फिलहाल बुढ़ा नहीं पर ठीक है, एक क्या मान लो, इसको बहुत बढ़िया, इसको बहुत बढ़िया. इस एज में अगर इसको ये हुआ तो कहना से बुढ़ा है. इट माइट बी ऑटो इम्यून पार्ट. उसके WBC साइनोवियल फ्लूइड को कंसीडरिंग एज अ फॉरेन सब्सटेंस वी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट. उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई. सो बॉडी कैन रिएक्ट टू दिस. और वहां पे भी एक ही वर्क कर रहा है, द टी सेल्स एंड बी सेल्स. ओके, सो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज अ फॉरेन सब्सटेंस, तो एंटीबॉडीज बनेंगी.
तो जिस दिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसको जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगा he has to take immunosuppressants, जिसके लिए उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल ना हो। ये सब कुछ लेने के बावजूद भी हजारों में एक रिजेक्शन हो जाता है, तो वो चाह सकता इमीडिएटली नहीं जाएगा, बिकॉज रिजेक्शन में इमीडिएट स्टॉप हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, इट विल टेक टाइम। बाय द टाइम यू कैन रिकवर, अगर कोई दूसरा मिला तो ठीक, वैसे सब्जी तो है नहीं तो भाई निकाला सारे क्या आ गया। तो दैट्स अ वेरी पर्सनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये आपको लेके ही चलना है रिस्क, ऐसा ना वो म्यूचुअल फंड में लिखा था रिस्क फैक्टर्स होते ही है, तो ऐसा ही है क्या, रिस्क ऑलवेज इज देयर। अब जिंदा रहना है तो रिस्क लेके जिंदा रहना ही पड़ेगा, वरना वैसे भी बाय बाय करोगे। हाँ माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, okay, they are minute oval or round structures, non-nucleated and floating in the blood. Count is 2 lakh to 4 lakh per cubic millimeter in an adult. Then इसमें सबसे important word मेगा कैरियोसाइट, underline वो word, fill in the blanks, derived from giant cells known as mega karyocyte. ब्लड सेल्स जो बनते हैं उनको बोला जाता है hematopoiesis. The process of formation of blood in your body is known as hematopoiesis. अगर इरिथ्रोसाइट बन रहा है तो इरिथ्रोपोएसिस, अगर ल्यूकोसाइट बन रहा है तो ल्यूकोपोएसिस, अगर थ्रोम्बोसाइट बन रहा है तो थ्रोम्बोपोएसिस। अब हर एक ब्लड सेल, सबसे पहला एक कोई सेल होगा दैट इज द स्टेम सेल ऑफ ब्लड, 9th स्टैंडर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वैसे ही अपने बॉडी में देयर आर स्टेम सेल्स जो ब्लड के लिए होते हैं, दैट आर द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, मतलब उस एक सेल से पूरे ब्लड सेल डिराइव हो जाएंगे। अब उसमें से अलग अलग लाइन बनेंगे, एक बनेगा इरिथ्रोसाइट, एक बनेगा ल्यूकोसाइट, एक बनेगा थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जिस सेल से बन रहा है उस सेल को बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट। इट्स अ हिमोपोएटिक सेल जिससे थ्रोम्बोसाइट बन रहा है। डायग्राम अगर दिखाया जाएगा आपको तो ये है मेगा कैरियोसाइट, एक बड़ा सेल है जिसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस है। ओके, as the cell continues to grow further, cytoplasm start extending like a branches, छोटे-छोटे से ब्रांचेस में एक्सटेंड होते जाता है, it is forming a big pseudopod like structures, फिर ये और बड़ा बनते जा रहा है, फिर और and then these branches break out to form small vesicles. Okay, this small fragments of vesicles are known as platelets. और न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा, that will be degenerated. So that is why it is non-nucleated. Clear with this? Yes. इस पार्ट में एक ही क्वेश्चन आ सकता है जो आपके बुक में ब्लू बॉक्स में दिया हो ऊपर। ओके, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब 3 मार्क के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। Okay, so what type of question they will ask? Same दिया जाएगा as it is, but blank कर दे। They would give you one this part, फिर ये blank, ये दिया, ये blank, ये blank, ये blank और शायद ये दिया, कुछ ना कुछ दिया, कुछ ना कुछ blank करके दे दिया होगा। Fill in the blanks. So that can be asked. Okay, so we need to understand the entire process also. पूरा पूछ लिया तो भी पता होना चाहिए और नहीं तो भी पता होना चाहिए। So अब सबसे पहला, whenever there is an injury to your body, so injured cells उस जगह पे immediately put a cut over here, उस जगह पे platelets आ जाएंगे, and the moment the platelet come over there, it will release a substance known as thrombokinase, also known as thromboplastin, also known as factor
10. It is not X. Okay? Reason. चल इस कैस्केड में मतलब स्टेप्स में अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपके लेवल का है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इट्स अ बेसिक स्टेप्स गिवन टू यू. Actual are more than 15 steps because in cascade में there are 13 factors involved. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 8, factor 9 ऐसे. ये factor 10, not factor X. स्टूडेंट फैक्टर भी कहा जाता है. अपन को ये सब पढ़ना नहीं है. हमें क्या याद रखना? टेक्निकली यू रिमेंबर दिस वर्ड thrombokinase. Why? Because anything which is AS is an enzyme by default. ये याद रखना है. So this produces an enzyme thrombokinase, which in turn catalyzes a reaction. Prothrombin converting into thrombin. Prothrombin कहाँ पे? प्लाज्मा में आपके. उसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में. In the presence of iron, calcium ions. Okay. अब thrombin also acts as an enzyme. ये भी एंजाइम की तरह काम करता है. Which converts fibrinogen. अपन ने देखा था fibrinogen, a protein present in the blood plasma. तो इस blood plasma fibrinogen soluble है. इसको convert करता है insoluble fibrin, which are thread-like structures. ये thread-like structures ऐसे arrange हो जाएंगे. Will form a mesh. Okay? और इस mesh के अंदर there would be clogged RBCs. जाली है, जाली के अंदर सेल्स ब्लॉक हो गए. Okay? This reddish color structure along with the mesh and the RBCs is what we say as the clot. इसे अपन बड़े प्यार से स्क्रैच कर करके निकाल के स्क्वीज करके ब्लड बाहर निकाल के पूरे स्कूल में घूम के आए. मैडम ब्लड नर्स रूम जाओ. वो उस बहाने पूरा आधा एक घंटा घूमेगा, फिर नर्स रूम में जाएगा, फिर दवाई लेके आए. तब तक टीचर का लेक्चर खत्म, सबमिशन था या होमवर्क नहीं किया. अरे अच्छा है नहीं, ये होता है माय डियर. तो बोली मत मुझको, हर एक ने किया है कभी ना. क्या बंद कर पैसे नहीं करते, मतलब बॉडी को हार्म करके हम कुछ नहीं कर सकते. Now my question to you is very simple. चाहे इसका आंसर आज नहीं मिलेगा तो सोच के बताना. कट हुआ क्या बनेगा? थ्रोम्बस क्लॉट. Okay, so obviously clot blood stop हो. अब when your blood is circulating in your body, तब क्लॉट क्यों नहीं करता? पहला क्वेश्चन. सर वो सीमेंट नहीं पिगमेंट. दूसरा क्वेश्चन. ओके, ब्लड घूम रहा है, कट नहीं हुआ, तभी भी अंदर में क्लॉटिंग होता है. अब हम बोलते ना अरे इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग, तो वो क्यों होता है? ओके, एक क्लॉट क्यों नहीं होता है और एक क्लॉट क्यों होता है? उसमें ढूंढना मत. वो बॉल पे किस तरह रहता है? क्या बॉल पे किस कहते हैं सर? नाम एक पिगमेंट है उसका नाम नाम नहीं है. अच्छा क्या नहीं? One reason is when your blood is circulating in your body, this clot formation takes place when the blood is exposed to air. Cut हुआ, exposed to air हुआ. But normally also will not clot, but आपके body के अंदर plasma में there is a chemical.
heparin, very which is an anticoagulant. What are three VIP lists? Indra, Krish, or Raman. Indra, Krishna, Krish बेचारे उसने बोला क्लास में जगह नहीं है. Don't say me बिचारा. My dear, एक बार गलती होती समझ में आती है, दूसरी बार हो तो पता है बार बार, and they are like useless. सबको डिस्टर्ब कर रहा है. अभी तो उसको मैं अरे इंडिया का बैटिंग गुड जाएगा.